अपना अवार्ड ना अपने पास रखो, मेरी दरगाह पे जाके चढ़ा देना. There might come this phase in your life when you might feel that what you're doing is worthy of a lot more honor, a lot more recognition. And yet you might have this fear that, like it's been the case with so many people, you might not get recognized for your work in this lifetime. Why am I talking about this? For two reasons. One, my name is Dhruv. I run an organization called Logophilia, जो कि मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सुलझा सकता है, which is the fact that people don't know how to study. लोगों को रटना आता है लेकिन पढ़ना नहीं आता. अगर सोचिए एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं और 50 के 50 पढ़ाई में तेज हो जाएं, तो इस देश का क्या हो सकता है, इस दुनिया का क्या हो सकता है? ऐसी कौन सी समस्या है जो सुलझाई नहीं जा सकती अगर पढ़े लिखे लोग बैठे हो, right? Logophilia can help with you. But I'm too small to be recognized in this phase of my life, and therefore it is possible कि एक समाना आए जब लोग समझ जाएं कि मैंने क्या किया था, मेरी वजह से क्या हो सकता था, और हो सकता है बड़ी प्रशंसा मिले, हो सकता है कभी ना मिले. इस बात को आज का डर ना समझिएगा. ये बहुत पुराना डर है जिसको लैटिन में बोलते हैं Cineri Gloria Sera Venit. Cineri as in Cinera, which is ashes, Gloria as in recognition, Sera as in late, and Venit as in come. Glory that comes to ashes is too late. Don't you agree?